Hello students, I am Rahul Mishra and today we will discuss the chapter chemical reaction and chemical equation. So in this chapter, first we will discuss the topic what is chemical reaction. So listen, the topic is chemical reaction. So what is chemical reaction? So listen, so we can understand the chemical reaction by taking an example. So listen, if we react Zn and sulfuric acid, that is H2SO4, then it will form ZnSO4 plus H2, that is hydrogen gas. So listen, from this example we can successfully understand what is chemical reaction. So listen, chemical reaction is a process. Chemical reaction is a process in which two substances are more than two substances. It means chemical reaction एक तरह की प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं. दैट इज केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंस आर मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. दे विल फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. Then that process will be called as chemical reaction. It means chemical reaction एक तरह की process होती है जिसमें दो या दो से अधिक substance या पदार्थ आपस में react करके कुछ नए substances का formation करते हैं या निर्माण करते हैं. तो उस process को हम कहते हैं chemical reaction. Now listen. In case of chemical reaction, there are two terms. It means chemical reaction के अंदर दो term आते हैं. So first one is what is chemical equation. Chemical equation. So chemical equation is the symbolic representation of any chemical reaction. It means chemical reaction या एक प्रोसेस का symbolic representation या symbols में representation ही कहलाता है chemical equation. For example, एक chemical reaction हमारी हो रही है जिंक मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है. It means this is chemical reaction. बट इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दैट इज वी नीड अ केमिकल इक्वेशन. दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. बट ये जो प्रोसेस है जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. It is the symbolic representation of any chemical reaction. So chemical equation में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंबल्स. किसकी सिंबल्स? द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. इट मींस एलिमेंट जो भी हमारा रिएक्ट कर रहा है उसका सिंबल यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज सिंबल ऑफ जिंक. ये क्या है हमारा? जिंक मेटल का सिंबल है, सिंबल ऑफ जिंक मेटल. और केमिकल इक्वेशन में क्या होगा?
फार्मूला हम लोग यूज करते हैं. सो दिस इज केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड. एंड लिसन, जो हमारे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, that reacting substances are called as reactant. It means in this case Zn and H2SO4 are reacting substances, so they are called as reactant. It means reactants को हम लोग उनके सिंबल से, अगर वो एलिमेंट है तो उसका सिंबल लिखेंगे, अगर वो कंपाउंड है तो उसका हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे इसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए. एंड लिसन, द सब्सटेंसेस produced in a chemical reaction are called as product. It means जो produced substance है उनको हम लोग कहते हैं product. So product are the produced substance which are obtained after the reaction of two or more than two reactants. It means जब दो या दो से ज्यादा reactant आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सब्सटेंस हमारे बनते हैं रिएक्शन के बाद उन सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट कहते हैं या फिर प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं. नाउ लिसन, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स आर reacting substances. Reactants are reacting substances. Now listen. So second term involved in chemical reaction is type of chemical reaction. Type of chemical reaction. Now listen, chemical reaction is of mainly two types. First one is balanced chemical equation and second one is unbalanced chemical equation. So we discuss the first type, balanced chemical equation. Balanced chemical equation. First type is balanced chemical equation. So listen, this is the type of chemical equation. First type of chemical equation. First one is balanced chemical equation. So what is balanced chemical equation? So now to understand this topic, we take an example. For example, C plus O2 gives out CO2. So this is a chemical equation. It means a chemical equation. So listen, we all know that carbon reacts with oxygen and it will form CO2. So what are reactants? Reactant are reacting substances. It means इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन गैस हमारे क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट. रिएक्टेंट हमारे हैं कार्बन और ऑक्सीजन and CO2 is product. It means we can say left hand side is reactant side and right hand side is product side. It means, listen, what is balanced chemical equation? So those chemical equation in which atoms present in reactant side will be atoms present in product side. It means एक ऐसी chemical equation
सेम हो और एटम्स इंडिविजुअली भी आपस में क्या हो, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो। नाउ लिसन, you can see here in reactant side and in product side. So how many carbon atoms are present in reactant side? That is 1. And how many carbon atoms are present in product side? That is 1. How many oxygen atoms are present in reactant side? That is 2. And how many oxygen atoms are present in product side? That is 2. So listen, you can see here the number of carbon atom in reactant side is equal to the number of carbon atom in product side, and the number of oxygen atom in reactant side are equal to the number of oxygen atom in product side. It means एक ऐसी chemical equation जिसमें number of atom reactant side में और number of atoms product side में बराबर होते हैं, then that chemical equation will be called as balanced chemical equation. Now we will discuss the second part of type of chemical equation is unbalanced chemical equation. That is also called as skeletal chemical equation. Now second part is unbalanced chemical equation. So what is unbalanced chemical equation? So we can understand this part by taking an example. So for example, S2 plus O2 gives out S2O. So in this chemical equation, in reactant side, how many hydrogen atoms are there? That is 2. In product side, how many hydrogen atoms are there? 2. In reactant side, how many oxygen atoms are there? 2. But in product side, how many atoms are there? That is only 1. So you can see that the number of hydrogen atoms are equal in reactant and product side, but the number of oxygen atoms are not equal in reactant and product side. It means this chemical equation is not balanced. So that's why it is called as unbalanced chemical equation. It means those reaction in which the number of atoms in reactant side and the number of atoms in product side are not equal, then that chemical equation will be called as unbalanced or skeletal chemical equation. So listen, these are the two main types of chemical equation.